Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5 clauses. Okay, let's just start now this chapter. Kids, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्लोज क्या है. A clause is a group of words that contains a subject, a predicate and a infinitive verb. जो क्लोज होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट से मिलकर बने होते हैं. A clause may form part of the sentence. क्लोज जो होती है सेंटेंस का एक पार्ट होती है. It makes complete sense, जिससे मिलकर सही अर्थ निकलता है. A sentence has one or more than one clause. एक सेंटेंस एक या एक से अधिक सेंटेंसेस से मिलकर भी बन सकते हैं. Read the following sentence है. Ravi jumps into the river. The student visited the Taj Mahal. The farmer repeat his crop and sold at the market. Okay. चलिए in the above sentence we can say that there is a infinitive verb. यहाँ हम कह सकते हैं ये एक infinitive verb है. In each of the group of word, each of them makes complete sense. क्योंकि ग्रुप का एक शब्द ही सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद कर रहा है. Such group of word, इन्हीं शब्दों के ग्रुप को हम क्लोजेस कहते हैं. ओके. जैसे नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लोजेस. क्लोजेस के टाइप्स. There are 3 types of clauses and they are discussed as follow. Number first है principal and the main dependent clause. चलिए, a clause which has a subject and a verb does not depend on any other clause. ये जो सेंटेंस होता है ये सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंड होता है, बाकी इसे अंदर वर्ड की नीड नहीं होती. Is called a principal clause. इसे हम principal clause कहते हैं. Example, I am not aware. मैं अवेयर नहीं हूँ where he is going, वह जहाँ वह जा रहा है. Don't interrupt while I am doing my work. In the above sentence, I am not aware and don't interrupt are principal clause as they make a complete sentence. ये अपने आप में एक complete sentence बनाते हैं, इसलिए हम इनको principal clause या main clause या dependent clause कहते हैं. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लोज. व्हेन टू क्लोज आर कंबाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन. जब दो सेंटेंसों को मिलाने का कार्य दो क्लोज करती हैं तो उसे हम कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन कहते हैं या कोऑर्डिनेटेड क्लोज कहते हैं. जैसे एज, एंड, बट, यट, एज वेल एज, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, एटसेट्रा. दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लोज. एग्जांपल है जॉनी विल गो एंड Mohit will come. In this sentence, Johnny will go and Mohit will come are two independent clause, but the first one is called the principal clause and the second one is called the coordinate clause connected by and. Next है subordinate clause. This clause is also a dependent clause. यह clause क्या है? Dependent clause भी है. It has a infinitive verb and a subject. इसमें infinitive verb और subject होता है, but does not make complete sense on its own. लेकिन ये अपना complete अर्थ नहीं रखती. It is dependent on principal clause. यह किस पर करती है? Principal clause पर dependent होती है to express its meaning. Okay, example है The teacher asked the student. Teacher ने student से पूछा Why she came so late? तुम इतने लेट क्यों हो? जो पहला सेंटेंस है वो है प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा सेंटेंस है सब ऑर्डिनेट क्लोज. ठीक है. चलिए आगे है. इन द अबव गिवन सेंटेंस द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट. टीचर ने स्टूडेंट से पूछा इज द प्रिंसिपल क्लोज कि प्रिंसिपल क्लोज क्या है एंड द क्लोज व्हाई सी कम्स सो लेट इज अनेबल टू मेक अ कंप्लीट सेंस. तो यह क्या करते हैं? कंप्लीट सेंस रखती है एंड डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंडेंट होती है. thus it is called a subordinate clause. इसलिए हम इसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं. चलिए आगे है किड्स. टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस. नंबर फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज देन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. नंबर फर्स्ट है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड द एडवर्ब क्लोज. चलिए डिस्कस करते हैं हम
noun clause, a noun clause which acts as a noun, जो clause होती है वो noun पर depend होती है, which is used in the place of noun is called the noun clause, और noun की जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे noun clause कहते हैं. Example है, to identify the noun clause of question is formed by adding what. इसमें question होता है, add किया जाता है what to the main verb and the clause in the which we guess its answer with the noun clause. Okay. Example है, she told me that she was not keeping well. In the above sentence, what did she tell you? Is the question that she was not keeping well is an answer which is in a noun clause. Okay. Corresponder है, a noun clause can be used as a subject. Noun clause का use subject के रूप में किया जाता है. Example, when she will return is not sure. A noun clause can be used as the complement is to an incomplete verb. Example, he is what he has made himself. Next, it can also be used an object of a transitive verb. Example, do you know why is absent? Okay, चलिए आगे है एडजेक्टिव क्लोज. ए क्लोज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के रूप में, उसी को हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं. एग्जांपल है, द न्यू कोट. कोट की एडजेक्टिव क्या है? न्यू. इज इन द कार. ओके, द कोट विच आई बॉट यस्टरडे इज इन द कार. In the first sentence, the word new describes the coat. That means it is an adjective. In the second sentence, the clause which I bought yesterday modifies the noun cars. जो car को modifies कर रहा है. That means it does the work of an adjective और वह adjective पर कार्य करता है. It is therefore an adjective clause. Points to ponder है, an adjective clause is usually placed immediately after the noun or pronoun. Okay, noun or pronoun से पहले it modifies, while an adjective often comes before the noun or pronoun. To introduce an adjective clause, we use relative pronoun who, whom, whose, which and that. Okay, चलिए एग्जाम्पल है, she is a girl who works in my office. वह गर्ल है जो मेरे ऑफिस में काम करती है. He lost the painting that you gave him. उसने पेंटिंग लॉस्ट कर दी जो आपने दी थी. In the above sentence, who and that are the relative pronoun. यह pronoun को relate करते हैं used to introduce adjective clause में. Relative adverbs use होते हैं where, when and why के रूप में. Example है, I have visited the place where लॉर्ड कृष्णा was born. हम वहां प्लेस घूमने गए थे जहां लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था. The time when the flight will land has not been announced. In the above sentence, where and the when are relative adverbs used to introduce adjective clause. Okay, चलिए next kids, adverb clause. An adverb clause does the work of adverb. एडवर्ब क्लोज वह कार्य करती है एडवर्ब का. इट कैन मॉडिफाई ए वर्ब. यह वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है एंड वर्ब को. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है, द स्टोरी एंडेड एज आई हैड इमेजिन. मैंने स्टोरी एंड की जैसे मैंने इमेजिन की थी. द बेबी क्राइड व्हेन इट सॉ ए कैट. जैसे बच्चे ने बिल्ली को देखा तो वह क्या करा? रोया, चिल्लाया. The wind blows where it likes. My younger sister is taller than I am. In the above sentence, the highlighted words are adverb clause. Next है types of adverb clause का है. Adverb clause of time. It shows the time of action. यह time को indicate करता है. It usually introduced by when, while, and, whenever, after, before or since. Example है, I eat my food after I have served my parents. He came after night had fallen. Points to ponder है, adverb clause of time uses paired or correlative conjunctions such as hardly, when, scarcely, when, barely, when, no sooner than, etc.
एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस है, इट शोज द प्लेस ऑफ एक्शन। ये किसको करते हैं? एक्शन को शो करती है। इट स्टार्ट विद वेयर और वेयर एवर। एग्जाम्पल, ही शैल गो वेन एवर हिज मदर गो। आई लुक फॉर हिम, मैंने उसको देखा। वेयर एवर आई कुड, जैसे मैंने पाया। एडवर्ब क्लूज ऑफ मैनर, इट शो द मैनर ऑफ एक्शन। यह शो करती है एक्शन को। इट यूजुअली स्टार्ट विद, यह स्टार्ट होता है एज इफ, एज सो और इन द वे के रूप में। एग्जाम्पल है, ही क्राइड एज इफ ही वर इन द डीप पेन। He talked as if he knew everything. Next, adverb clause of reason. It shows the reason behind the action. It begins with because, since, as, or that. Example is, she went to the office because her boss wanted to meet her. Next, I am glad that you have come. Adverb clause of comparison है. It indicates a comparison of क्वालिटीज। यह क्वालिटीज को क्या करते हैं? इंडिकेट करती है। इट यूजुअली बिगिंस विद देन एंड नो लेस देन और एज के माध्यम से। एग्जांपल है, ने इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। शी इज एज डेलिकेट एज शी इज ब्यूटीफुल। ओके, चलिए आगे है रिलेटिव क्लोज। A relative clause tells us which person or things. जो relative clause होती है वो person और place को indicate करती है। is referred to by the speaker द्वारा। It can also indicate what kind of person, यह बताती है किस तरह का व्यक्ति, person और things है speaker name में। Words like who, which, that are used to introduce it, जिसको हम introduced करते हैं। It is often an adjective clause, और जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं, विच डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। रिलेटिव क्लोज आर टू टाइप्स, डेफिनिंग और नॉन डेफिनिंग। एग्जाम्पल है, शी इज लुकिंग फॉर द गर्ल्स, उसने वह लड़कियों को देखा, फॉर हु लिव्स इन द न्यू हाउस, जो नए घर में रहती है। नेक्स्ट है, वी वांट टू अ शॉप, वह शॉप गई, विच सेल्स ग्रोसरी आइटम, जिसने ग्रोसरी आइटम खरीदा। In the above sentence, the clues who lives in the new house indicates which girl. The clues which sells grocery item indicates which shop. This type of the relative clause is called a defining clauses. Okay. Example है, she is looking for Ravi who borrowed her book. Next, we want to superstore which sells grocery items. Okay. चलिए नेक्स्ट, इन द अबव सेंटेंस द क्लोज हु बोरोड हर बुक एंड विच सेल्स ग्रोसरी आइटम टेल्स अस विच पर्सन और प्लेस इज मेड। एग्जांपल, रवि सुपर स्टोर, वी ऑलरेडी नो विच पर्सन और शॉप इज मेड। सच क्लोज आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस। ओके, चलिए आगे हैं डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग और द नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस। With defining clauses, we do not use commas. इसमें commas का use नहीं होता। We can use that in the place of the who, which, and we can leave out who, which, that when it is the object का use किया जाता है। Example, we stay at a place, वह एक जगह पर रहे। You told us about, जैसे तूने बताया, defining clause कहलाता है। Next है, विद नॉन डिफाइनिंग क्लोज वी यूज कॉमास। नॉन डिफाइनिंग क्लोज में कॉमा का यूज किया जाता है। वी कांट यूज दैट का यूज नहीं होता। वी कांट लीव और हु, विच। एग्जांपल, ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल विच इज नियर अवर हाउस इज गुड। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग सेंटेंस विद रिलेटिव क्लोज। वी कैन यूज रिलेटिव क्लोज टू जॉइन टू सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट है, वर्णित प्लेज फुटबॉल, वर्णित फुटबॉल खेलता है। He was selected for the team. Varnit who plays football was selected for the team. The boy stood at the gate. He greeted me cheerful. And next, the boy who stood at the gate greeted me cheerful. Okay? इसे हम who से जोड़ते हैं. Okay? Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.